Okay, so last time we have already done all the theory regarding your alpha decay, mathematical भी हो गया, conceptual भी हो गया, diagrammatically भी हो गया, और कुछ reasons भी we have put up कि why there is some kind of potential which are missing in that, and does that have any effect? Yes, it has a effect, but that effect is very minimal with respect to your normal potential function, which is your Coulomb repulsion. तो बाकी पोटेंशियल से वर्क करते हैं, बट उनका रिजल्ट बहुत मिनिमल होता है. टू फाइंड दोज रिजल्ट और टू डिटरमाइन दोज रिजल्ट वी रिक्वायर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास जो रिलेट कर सकते हो, that is splitting of your yellow light of a sodium. So there is hardly a 6 angstrom of a difference, and you have to split up. Your spectrometer does not do that. Then you have to add a small mode device with your telescope. Then it is having a resolution, means it will able to resolve that particular two lines. In the same sense, we also have in these things that whenever the alpha decay is there, there is energy. That energy will be 5.623 mega electron volt. But if you do a fine experiment, then it would be an average of certain more energies, something like that, which you are missing. Actually, plus minus things you are missing. You are not able to measure that. So we need to do the fine measurements. But उस detail में हम नहीं जा रहे हैं. We are not going into that detail. And Gamow theory or Geiger-Nuttall law, both are well well behaved for those nuclei in which we have even number of Z and even number of N. If you have odd A nuclei, or if you have odd cases, means if your nucleus is having odd number of Z and odd number of this N, or if you have either one of them is a odd number, then also they don't follow this trend. There is a some kind of deviation from this particular trend. So that is not answered from these detailed things, because they have certain assumption, and the assumption are more channelized. Actually, they have been channelized in a proper way, and we get a result in a proper way. So that is concerned with the Z and N having even number. So that will fit very well. But odd cases के लिए नहीं है, और even odd cases के लिए भी नहीं है. But वो हम यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे. So today we will just do the last topic concerned with your alpha decay. And the problem based on this last topic we will do in the tutorial class. So let me just share the file to you. The topic is actually the conservation of angular momentum and parity. So whenever you have any decay or any reaction, it's just like a nuclear reaction. So any reaction or any decay process, you have a conservation of certain things. There will be a conservation of energy, there will be a conservation of momentum, linear, there will be a conservation of angular momentum. Angular momentum have two components. You have spin and you have orbital. Then you have parity conservation, then you have a charge conservation, and there are several other conservation that is concerned with quantum numbers. तो वो अभी हमें नहीं करना, हमें सिर्फ एनर्जी हो गया, एनर्जी हमने कर लिया, एनर्जी हम कंजर्व कर ही रहे हैं. सारे केसेस में कहीं पे भी हमने एनर्जी वायलेट नहीं किया, वायलेट भी किया है तो फॉर अ शॉर्टर टाइम किया है, और हमने वो भी कर लिया. मींस जस्ट होल्ड ऑन. सो एंगुलर मोमेंटम का कोई अभी प्रॉपर हमने वो नहीं किया है. एनर्जी कंजर्वेशन तो हमने कई जगह यूज कर लिया है, अल्फा डीके में भी यूज किया था. इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी. मेरे ख्याल से हमने एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके किया था, तो उसमें हमने ये इक्वेशंस यूज किए थे. But here we will do the angular momentum conservation. What happens to the angular momentum and how we can define the angular momentum of a outgoing alpha particle. तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, that we have to do. And we will also see what is the parity. And according to this, we can also justify why some alpha decay for certain nucleus is allowed, and why certain alpha decay, even though their mass is less,
Still that is not allowed because the conservation of these parameter is not fulfilled. तो कहीं पे अलाउड होते हैं रिएक्शंस और कहीं पे नॉट अलाउड होते हैं, या जिसको हम फॉरबिडन कहते हैं। बहुत सारे केसेस में आपने फॉरबिडन वर्ड सुना होगा, पीएन जंक्शन में भी फॉरबिडन रीजन आपने सुना है। फॉरबिडन रीजन क्या होता है? जहाँ आपका करंट फ्लो नहीं होता है ना, दैट इज आउट ऑफ बाउंड, यू कैनॉट गो देयर। Okay, so angular momentum, if you write, so this is your angular momentum conservation formula. I of parent nuclei, which we will call it as II initial, and that will become IF, that is daughter nuclei I. I ध्यान है ना क्या है? Spin of nucleus, which is due to the valence proton or valence neutron. You remember this या नहीं? याद है ये आई क्या लिखा है मैंने? आई लिखा तो आई का मीनिंग क्या है? स्पिन ऑफ अ न्यूक्लियस। एंड स्पिन ऑफ अ न्यूक्लियस का मीनिंग कुछ नहीं है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस एज अ सिंगल एंटिटी। याद है? यस नो? कुछ नहीं बताओ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि याद है? हाँ, हमने इवन शेल मॉडल में भी किया था। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने कुछ न्यूक्लियस के हमने आई और पाई दोनों वैल्यू निकाले थे, जिसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं आई, यहाँ पे सफिक्स या सुपरस्क्रिप्ट में पाई लिखा होता है। तो दिस इज योर total angular momentum and this is your parity, and this thing is given in your crane also for most of the stable elements, or you can say nuclei. चलो एक बार ये देखो कि आई क्या है। मैं एक बार जस्ट वेट करो 2 मिनट। हाँ, याद आया क्या है आई? या एग्जाम के टाइम ही याद करोगे? आप लोग एग्जाम के टाइम सारी चीजें याद कर लेते हो। योर एफिशिएंसी इज वेरी हाई ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट लिखेंगे क्या? अल्फा पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई must be, even arrow डाला है, but must be equal to the total angular momentum of your daughter nuclei plus the orbital angular momentum, इसको मैंने आई नहीं लिखा, orbital angular momentum of alpha particle। spin of alpha particle क्या वैल्यू होगी?
अल्फा पार्टिकल की स्पिन वैल्यू क्या होगी? अल्फा पार्टिकल की स्पिन वैल्यू क्या होगी? टोटल स्पिन ऑफ द अल्फा पार्टिकल। Zero. Zero. Yes, because it has two protons. They are means they are antiparallel. It has two neutron that will go in a 1s orbit. Next one will also go in a 1s orbit of the neutron orbital system, and one will go in the proton orbital system, and both are 2 2. So they will form a pair and anti-parallel way. So that total will be 0. That is why we only have, means J is actually L plus S. So if this is 0, then J is nothing but L. It means for alpha particle, we only have orbital angular momentum. We don't have spin. Spin is 0. It is a boson. If you can say it is a boson, it will behave as a boson. So alpha particle is having a 0 spin value. So the contribution of total angular momentum is only from the orbital structure, orbital motion of the alpha particle. Okay, so this is the equation of you can say the conservation of angular momentum, not the linear. Linear हमने कर लिया था energetics में. So we are concerned with this one. So what is the value of L alpha? So L alpha, अब ऐसा नहीं होगा कि इसको सिर्फ माइनस कर सकते हैं, बिकॉज आई आई इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल अल्फा. तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ ऐड नहीं होते हैं, वो सब ट्रैक भी हो सकते हैं. इट मींस एल अल्फा कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस. कुछ भी हो सकता है. इवन मैंने मॉड लगा दिया है. मॉड तो मैंने उसके मैग्नीट्यूड के सेंस में लगाया, बट इट कैन हैव माइनस साइन एंड प्लस साइन, बट मीनिंग नहीं होता है माइनस प्लस का ऑर्बिटल के केस में. तो बट दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग द मॉड साइन. So any value, it can take any value, sorry, this is plus, any value from I minus IF to II plus IF. तो कुछ भी हो सकता है. वो नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है. एनीथिंग दैट नंबर कैन बी. ठीक है. इज इट ओके? नाउ पैरिटी जो आपका इन्वॉल्व होगा इस पर्टिकुलर डीके प्रोसेस के लिए, तो पैरिटी चेंज विथ अल्फा एमिशन, that will be equal to -1 to the power of L alpha. यानी जब अगर आप डेल्टा पाई निकालते हो कि पाई चेंज कितना हुआ है, यानी पाई आई माइनस पाई एफ. या ऐसा तो नहीं करते हैं हम, इसको माइनस प्लस में नहीं करते, इसको सेंस में अगर देखो तो दैट विल बी समथिंग विच इज यू कैन टेक मल्टीप्लाई दैट. माइनस वाला सेंस कहने को होता है कि इनिशियल माइनस फाइनल या इनिशियल और फाइनल के रिस्पेक्ट में, दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग. अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस हो रहा है, तो देयर इज अ पैरिटी चेंज. ये भी नहीं लिखना, ये भी सही नहीं है, बट एक बार आइडिया के लिए कि भी इनिशियल पैरिटी और फाइनल पैरिटी में देयर इज अ चेंज, तो वी विल जस्ट कॉल इट एज अ डेल्टा पाई. ये भी छोड़ दो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे. देयर इज अ डेल्टा पाई, यानी डेल्टा पाई का मीनिंग है या तो प्लस हो जाएगा, दैट विल चेंज टू माइनस. माइनस है तो दैट विल चेंज टू प्लस. दिस इज अ पैरिटी चेंज. देयर आर टू नंबर्स एंड these numbers are, one is plus unity and another is minus unity. तो या तो ये प्लस से माइनस हो गया स्टेट में, या माइनस से प्लस हो गया. ये किसके हैं? आपके पेरेंट न्यूक्लिया के, और ये आपके डॉटर न्यूक्लिया के. तो डॉटर न्यूक्लिया का और पेरेंट न्यूक्लिया में पैरिटी अगर चेंज है तो दैट डेल्टा पाई इज 1 यूनिट. यू कैन से दैट इज 1 यूनिट चेंज. तो 1 यूनिट का चेंज है पैरिटी में. 0 इज नॉट काउंटेड. सो दिस इज समथिंग लाइक अ 1 यूनिट चेंज. माइनस से प्लस हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, एंड दैट नंबर इज -1 टू द पावर ऑफ एल अल्फा. अगर एल की वैल्यू 0 है तो आंसर आपका 1 है, यानी पॉजिटिव नंबर है. एल की वैल्यू 1 आती है तो आंसर आपका माइनस है, यानी पैरिटी चेंज होगा. एल की वैल्यू 2 है तो पैरिटी चेंज नहीं होगा. एल की वैल्यू 3 है तो पैरिटी चेंज होगा. ठीक है. ये दोनों रिएक्शंस थोड़े से आपको, ये दोनों कंजर्वेशन लॉ याद करने पड़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और पैरिटी क्या होगा. पैरिटी का सिंपल जो स्टेटमेंट है, ये जो पैरिटी चेंज हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है, इट इज बेटर टू रिमेंबर इन द स्टेटमेंट फॉर्म. That if initial and final momentum, final nuclei have the same parity,
then L alpha must be even. जो मैंने अभी बोला, अगर मान लो आपका पैरिटी में चेंज नहीं होता है, इफ डेल्टा पाई इज जीरो और नो चेंज, जीरो भी वर्ड सही नहीं लगता पैरिटी के लिए, पैरिटी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. इफ इट इज नो चेंज, डेल्टा पाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नहीं प्लस स्टेट प्लस में ही रह रहा है, माइनस वाला माइनस में ही रह रहा है, then L alpha must be even number. If delta pi is either plus minus 1, it can have any value 1 unit, then L alpha will be odd. For example, for example, let us take one reaction, one decay process, uranium 236, that changes to thorium 232. 4 का डिफरेंस आ गया, इसका 92 होता है, इसका 90 होता है, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया. अब जरा चेक करो, इफ यू हैव क्रेन इन योर हैंडी फॉर्म, अगर आपके मोबाइल में सेव्ड है या लैपटॉप से आप ले रहे हो, तो आपके पास क्रेन को मैंने शेयर किया था, क्रेन में से चेक करो कि इस इसका आई और पाई का वैल्यू क्या है, और इसके आई पाई का वैल्यू बताओ मुझे. दोनों के आई पाई की वैल्यू बताओ. आई पाई मीन्स मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी, दोनों की वैल्यू बताओ. क्रेन में मेंशन्ड है, लास्ट के पेजेस में आपको दिख जाएगा, अपेंडिक्स में. हैंडी है आपके पास क्रेन? ये बताओ पहले, हैंडी है या नहीं है, ये बता दो. आपके पास अवेलेबल है या नहीं? चेक कर रहे हो? यस नो कुछ बताओगे तभी तो मुझे भी पता चलेगी चेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या पेज खुल रहा है नहीं खुल रहा है. मैं शेयर करूं क्या? सर किसकी वैल्यू निकालनी थी? आपको मुझे सिर्फ उस टेबल को देख करके यूरेनियम 236 और थोरियम 232 का आई पाई की वैल्यू बतानी, बस निकालनी है, भी कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू बतानी है आपको. You have to just give the value, that's all. सर 0+. 0+, वेरी गुड. और थोरियम का? सर वो भी 0+. So let us write that it is 0 and plus, it is also 0 and plus. 0 means the total angular momentum is 0 because all things are paired. तो हमें इसको देख के ही कह देना चाहिए था कि अगर टेबल नहीं भी देखते तो दोनों नंबर को देखते ही आप कहोगे everything is even, so that will have unpaired, no unpaired proton or no unpaired neutron, so the total angular momentum will be 0. ये तो 0 है. अब प्लस माइनस का आइडिया नहीं होता है, प्लस माइनस के लिए हमें टेबल देखना होता है कि पैरिटी है उसका वेव फंक्शन का प्लस है या माइनस है क्या है, so that we have to look into the table. So this is plus. It means if you, then you can easily say that whenever the alpha is coming out after this decay process, then L alpha, what will be L alpha? I final, I initial minus I final से कहाँ जाएगा? I initial plus I final. There is only possible number 0 to 0. It means L alpha will be 0 for this case. It means the outgoing alpha particle will have 0 orbital angular momentum. The L alpha, that is
orbital angular momentum of alpha particle, which is being coming out or emitted after the decay of uranium, that will have zero angular momentum. Clear? Is it clear? कैसे हम निकाल रहे हैं? यहाँ आंसर बहुत इजी था इसलिए बहुत जल्दी सोल्यूशन निकल गया, बट कुछ केसेस में डिफिकल्ट भी होता है. इट इज नॉट सो इजी एवरी टाइम. तो ग्राउंड टू ग्राउंड स्टेट में इट इज जीरो. व्हाट अबाउट डेल्टा पाई? Delta pi will be -1 to the power of L alpha, -1 to the power of 0. That means +1. जो आपका चेंज होगा पाई में वो आपका 0 है ना. आपका यहाँ क्या है? -i to the power of 0. तो ये इवन पैरिटी का होगा. तो पाई की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी. इवन पैरिटी जब भी आपके पास ऊपर आपके पास देखो क्या है. Okay, let me just okay, delta pi is not changing. Okay, this one is, let me just correct it because I think अगर plus ले लोगे तो change हो जाएगा. Delta pi is no change. Then you have a even number which is already there. आपके pi value में change नहीं आया है तो आपका L alpha even number है, that is okay. If it is plus minus 1 change, then it should be a odd number. तो इसको plus minus 1 भी नहीं लिखते हैं और confusion हो जाएगा if there is a change. क्योंकि 1 भी आंसर आ रहा है ना हमारा. -1 to the power of अगर L alpha डालते तो 1 आंसर आता. तो let us go in this way. It is better to understand in this way. The delta pi no change, then L alpha is even. If it is change, then it is odd. तो यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे जो आपका आंसर आया कि आपका L alpha की वैल्यू 0 आई है. 0 means it is a even number. It means there should be no change. ये जो आप अगर इस तरीके से निकाल रहे हो तो +1 आ रहा है, but you can always write that is no change. एंड ऑब्वियस है आपका ग्राउंड स्टेट प्लस का ही है और आपका डॉटर न्यूक्लियर भी प्लस पैरिटी का ही है. तो पैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा. जो वेव फंक्शन यूरेनियम के ग्राउंड स्टेट का है वही वेव फंक्शन की पैरिटी आपके थोरियम के ग्राउंड स्टेट 232 की. तो देयर इज नो चेंज इन द पैरिटी बिकॉज द एल अल्फा इज इवन नंबर. एल अल्फा इज अ इवन नंबर. अब एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं ये क्योंकि बहुत सिंपल सा था. तो लेट अस टेक अ मोर complicated one. Neptunium, I think this is Neptunium NP 237, and that is decaying into means emitting alpha particle, and Pa 233 and plus an alpha particle. What is this I pi for this one and I pi for this one? एक बार जरा निकालो I pi की वैल्यू क्या है. चेक करना है, निकालना नहीं, चेक करना है. Just check in the table for this case and for this case. आई पाई की वैल्यू बताओ. NP 237. 5/2 plus. 5/2 plus. And what is I pi for Pa 233? पैलेडियम है, क्या है नाम इसका, क्या है? 3/2 minus. 3/2 minus. Okay. 3/2 minus. तो first we will find the L alpha. L alpha की वैल्यू क्या होगी? II minus IF. It will go up to II plus IF. What is this value? 5/2 minus 3/2 क्या मिलेगा? 5/2 minus 3/2. 1. And 5/2 plus 3/2. 5/2 plus 3/2.
5 plus 3, 8. 8 by 2, that will be 4. It means L alpha could be anything 1, 2, 3 or 4. अगर मुझे पैरिटी की कहानी नहीं पता है कि पैरिटी क्या चेंज हो रहा है या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, if it is same then L alpha will have different value. If it is changing, then L alpha will have different value. But as per only L alpha prediction with respect to your angular momentum of initial and final, means daughter and parent nuclei, you get 4 numbers. यानी कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है आउटगोइंग अल्फा पार्टिकल का पैरिटी, सॉरी एंगुलर मोमेंटम, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है. But when you look at the parity, there is a change in parity. So delta pi is not means equal to 0, or you can say it is changing. Changing क्या है? प्लस से वो पैरिटी आपकी माइनस हो रही है. It means the allowed L alpha will be a odd number. जब भी पैरिटी चेंज होगा, it is changing, then the L alpha will be odd number. Odd means it can only have 1 or 3. It will not have 2 and 4. As per this calculation, या ये जो आपका फॉर्मूला है, इसके हिसाब से 2, 4 भी पॉसिबल है. बट 2, 4 इसलिए पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि डॉटर और पेरेंट न्यूक्लियाई में पैरिटी चेंज है. अगर पैरिटी चेंज हो रहा है तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड विद दीज 2 numbers only, because whenever the parity change is there, the L alpha has to be a odd number. When there is no parity change, then L alpha has to be a even number. This is what you have to remember. If parity is changing for the parent and daughter, then L alpha must be an odd number. If parity is not changing, means plus plus रह रहा है, minus minus रह रहा है, तो आपका L alpha एक even number होगा. और L alpha की possibility आपकी यहाँ से मिलती है कि it will go from this value to this value with plus unit change. ये हमेशा plus unit change में जाएगा. तो आपके पास सिर्फ 2 ही केस आ गए. अब इन दोनों केसेस में से भी किसी केस की परसेंटेज ज्यादा होगी और किसी केस का परसेंटेज कम होगा. एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द अदर थिंग्स. तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट वी कैन गिव द आइडिया कि आइदर एल अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है या तो 3 हो सकती है. दोनों पॉसिबिलिटी है. फिर हमें एनर्जी का देखना पड़ेगा कितना ट्रांजिशन है, एनर्जी का लेवल क्या है, और उस एनर्जी के ट्रांजिशन से जो एल अल्फा एमिट हो रहा है, तो न्यूक्लियस के लिए कौन सा फेवर होगा, ज्यादा क्यू वैल्यू का फेवर करेगा या स्मॉलर क्यू वैल्यू का फेवर. दैट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो एंड यू नीड टू डू द स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो अभी सिर्फ हम एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी, वो भी बहुत जनरलाइज केसेस के लिए कर रहे हैं. बट वी कैन आल्सो सी सम ऑफ द थिंग्स व्हेन द न्यूक्लियाई, means when the parent nuclei, for example this one, it decay into a daughter nuclei. This is a parent, and when it decay into a daughter nuclei, means we will make this as a daughter nuclei, or this is one of the case. This is your daughter nuclei. That whenever there is a alpha decay, the daughter nuclei does not guarantee कि it will be in a ground state. It can be in any excited state also. यानी जब भी डिके होता है अल्फा, तो जो आपका डॉटर न्यूक्लियर जनरेट होता है, इट इज नॉट ऑलवेज इन द ग्राउंड स्टेट. देयर इज नो फिक्स काइंड ऑफ थिंग कि हमेशा वो ग्राउंड टू ग्राउंड स्टेट ही ट्रांजिशन होगा. इट कैन हैव अ ट्रांजिशन फ्रॉम पेरेंट ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट ऑफ द डॉटर न्यूक्लियर. तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि डॉटर न्यूक्लियर के आपके पास वो गिवन होते हैं एनर्जी स्टेट वैल्यू, और उसको एनर्जी स्केल में आपको डालना होता है. तो अगर मैं, सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये ग्राउंड स्टेट है और ये भी ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया. एंड इफ आई आस्क यू कि भाई जो अल्फा एमिट हो रहे हैं, ये पेरेंट न्यूक्लियर 4 डिफरेंट अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है अलग अलग एनर्जी के. यानी समटाइम एनर्जी इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समटाइम एनर्जी इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समटाइम एनर्जी इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समटाइम द एनर्जी इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी सेम ही न्यूक्लियाई आपके 4 डिफरेंट अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, जिनकी एनर्जी यूनिक है, और आपके वो 4 डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी को एमिट कर रहा है. देन डिटरमाइन द
ground state structure or some of the first or second or third excited state structure of the daughter nuclei. तो ये आपको एग्जांपल आ जाता है निकालने के लिए कई बार एग्जाम कि इनको अरेंज करो एनर्जी लेवल के फॉर्म में. तो मीनिंग क्या है, आपका जो एमिशन है सिंपल इस एनर्जी से इस एनर्जी, दिस अल्फा 1 I will call it as, that will be having the highest energy. डिफरेंस देखो, इस पॉइंट से जंप करके वो यहां तक आएगा तो it will have a biggest value of energy. When it jumps from ground state of parent to the first excited state alpha 2, this is alpha 2, and that will be less than your alpha 1, obvious है, क्योंकि ये तो ऊपर लिफ्ट हो गया ना, आपका ग्राउंड स्टेट से एनर्जी थोड़ी सी ऊपर लिफ्ट हो गई, मे बी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिफ्ट हो गया. अगर ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिफ्ट हुआ है तो इनका डिफरेंस भी डिक्रीज हो गया है. When it emit another alpha particle which goes to second, then alpha 3 will be less than alpha 2, and so on. Alpha 4 will be less than alpha 3. So if you have the knowledge of these alpha particle energy, you can easily predict different excited states of any daughter nuclei. अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी से यू कैन प्रेडिक्ट द डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस. इवन यू कैन प्रेडिक्ट वन मोर थिंग, all the excited state which you are getting due to these different alpha, because parent is not decaying only through ground state, it decay into the first excited state, decay into the second excited state, it can decay to the third, fourth, and so on. What it also give you कि which one is the allowed reaction. अगर आपका I और pi हर एक केसेस के लिए यानी अलग अलग एक्साइटेड स्टेट के लिए यू कैन इजीली प्रिडिक्ट दीज वैल्यूज आल्सो, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम भी चेक करना है, पैरिटी भी चेक करना है. तो आपका अगर जंप होने के बाद अल्फा पार्टिकल जो एमिट हुआ है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, पैरिटी क्या है, फ्रॉम दैट नॉलेज यू कैन प्रिडिक्ट ऑल द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दीज एक्साइटेड स्टेट, कि उनकी पैरिटी क्या होगी, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, and you can easily match those results with your shell model. Okay, ये वाला जो मान लो कोई बोलता है कि 3/2 प्लस वाला ऊपर है या 3/2 माइनस वाला ऊपर है, कौन सा ऊपर है आपके इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में, तो you can easily predict if you have the knowledge of all this alpha particle and its characteristic. Means something like angular orbital angular momentum और पैरिटी के बारे में अगर नॉलेज है तो you can predict कि डॉटर न्यूक्लियाई का ये वाला स्टेट ऊपर है या ये वाला नीचे है या 7/2 वाला नीचे है या प्लस वाला ऊपर है. You can arrange them, you can place them, and their energy is also known. अल्फा पार्टिकल ने कितनी एनर्जी की कैरी की है वो इनके एनर्जी से डिफरेंस करके यू कैन इजीली प्रेडिक्ट. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल डू वन क्वेश्चन इन द ट्यूटोरियल. देयर यू विल गेट अ न्यूमेरिकल थिंग्स कि वहाँ पे एक्चुअली आप कैलकुलेट करोगे कि भाई ये डिफरेंट स्टेट जनरेट होते हैं और हाउ वी फाइंड दीज स्टेट्स एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द अल्फा पार्टिकल एनर्जी. तो वो भी हम क्वेश्चन उसमें करेंगे डिटेल में ट्यूटोरियल में. तो आई विल शेयर एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग अल्फा डीके एंड इट्स न्यूमेरिकल बेस्ड इन द कमिंग ट्यूटोरियल क्लास दैट इज ऑन सैटरडे. तो सैटरडे को हम अल्फा डीके पे ही फोकस करेंगे क्योंकि ये हमारा करीब करीब खत्म हो गया है. तो हमें जो ध्यान रखना है, कुछ नोटेशंस ध्यान रखने हैं, कुछ पैरामीटर्स ध्यान रखने हैं, कुछ थ्योरम्स ध्यान रखने हैं जो हमने किए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिमेंबर रखनी है ताकि आप ट्यूटोरियल शीट को सॉल्व कर सको. तो हियर वी एंड द this alpha decay, and this is actually called as a spectroscopy of alpha decay, but not in detail but in a very surface way. हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं because every alpha decay is related with a gamma decay. तो गामा डीके भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसकी एनर्जी कितनी है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम बिल्कुल सरफेस पे ही रहेंगे. तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अल्फा डीके. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ डीके दैट इज बीटा डीके. And beta decay is very different from the alpha decay. Everything is different. The potential is not there. There is no barrier is there. No barrier is there. So it has a different theory. जैसे alpha decay का था वैसा theory beta decay के लिए follow नहीं हो रहा है. तो just we will start with the fresh page for the beta.
So beta decay is you are well aware that is बच्चे इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसे कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया न्यूक्लियस से. बच्चे यही कहते हैं मैक्सिमम से पूछो तो बीटा डीके इज emission of electron from the atom. This is the line they say. या मैं गलत हूं तो बताओ. हाँ, बीटा डीके इज emission of electron from the atom. ये लाइन मैंने सही बोला है गलत बोला है? हाँ सही है. हाँ यार बताओगे. हाँ सही है. नहीं सही नहीं है. क्या गड़बड़ है इसमें? जो मैंने लाइन बोली बीटा डीके इज emission of electron from the atom. So what is wrong in this? बोलो. एक एक करके बोल दो. Beta decay is related to nucleus. Okay, it should be mentioned that nucleus word should come there. Means atom बोलना गलत है वैसे, because atom जब हम बोल देंगे तो ऐसा लग रहा है कि orbital electrons emit हो रहे हैं. No, these are not orbital electrons. Actually, these particles are electron kind. They are not actually the orbiting electrons. So they are similar, or you can say it is a electron only. आपकी चार्ज की वैल्यू वही होता है, मास भी वही होता है, सब कुछ वही होता है. But they are originated from the nucleus. जैसे ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं ना तो फिर बच्चे कहते हैं कि ये क्या कर दिया आपने सर, न्यूक्लियस आप बोल रहे हो, ये तो गलत है, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं है. तो ऐसे कैसे पॉसिबल? और अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जनरेट भी हो गए तो हाउ दैट इज पॉसिबल टू कम आउट? इतना डिफिकल्ट है, इतने सारे प्रोटॉन उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं, बट स्टिल इट कम आउट. इमेजिन करो, full of positive charges there, and there is one electron which is generated by somehow, and it was able to come out. है मतलब ये कुछ भी आपको अजीब नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज यूजुअल. मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कुछ फर्क होना चाहिए. मतलब भी मेरे हिसाब से तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर कोई पढ़ रखा है अच्छे से तो you can easily say कि it is not possible to remove electron from the sea of protons. It is not possible. It is not imaginable. Okay, चलो कोई नहीं. So there is a theory again, there is a probability, and these probability are very far, means high value. वो अल्फा डीके की तरह उतना वो नहीं है. They are of high and good value, but this is also means process is different, but their activity is fast. उसका मीनिंग ये है कि अल्फा डीके आपके स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से इंटरेक्ट कर रहा था और कूलम फोर्स से इंटरेक्ट कर रहा था. दोनों फोर्सेस कंपीटिंग थे एंड दे आर बिहेविंग कि हाउ द थिंग्स विल कम आउट और इट विल नॉट कम आउट. जस्ट दे आर डूइंग, मींस दो फोर्सेस जो वहां पे इन्वॉल्व थे, दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड द कूलम फोर्सेस. और बोथ आर स्ट्रेंथ वाइज, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग. अगर आप स्ट्रेंथ वाइज देखते हो तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वैल्यू 10 टू द पावर 40 है with respect to the gravitation, and electrostatic force यानी कूलम इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ 10 to the power of 38 है with respect to gravitation. तो both are strong forces in relation to something else. तो दोनों ही बड़े ही competing way में compete कर सकते हैं. But beta decay is a fast process, and fast ऐसा नहीं कि हम बहुत fast का imagine कर रहे हैं, but it is due to the weak forces. This is one of the example of weak force. और अगर स्टार्टिंग लेक्चर में आपको मैंने बताया होगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का जो इंटरेक्शन टाइम है दैट वाज 10 टू द पावर ऑफ -22 के अराउंड का सेकंड से, मतलब -22, which is very small time. They interact in a very small time, and the weak forces, they are 10 times slower. Means they will have an interaction from something like 10 to the power of -10, -12, -13, -14 kind of thing. So around 10 to the power of 10 times slower. But obviously हमारे लिए तो दोनों ही फास्ट है.
हमारे लिए तो दोनों का मीनिंग सेम ही है. अगर मैं 10⁻10 कह रहा हूँ वो भी मेरे लिए फास्ट है, यानी मैं एंगस्ट्रॉम सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, या एंगस्ट्रॉम तो नहीं कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको, नैनो के नीचे क्या आता है, ऑटो सेकंड्स, या व्हाट वी कॉल इट, दैट एग्जैक्ट नेम आई डोंट नो. एंड 10⁻22 और -23 वो भी मेरे लिए बहुत ही फास्ट है. तो दोनों केसेस मेरे फास्ट है. बट इन रिस्पेक्ट टू द स्ट्रॉन्ग, these are weak reactions, weak interactions. They take so much time to have the interaction. तो बीटा डीके एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. स्लो प्रोसेस हमारे सेंस में नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोर्स के सेंस में. So they are slow process. What happens in the beta decay? Obviously, these electrons or beta particle are generated in the nucleus, and they are able to escape from the nucleus, even though अगर नेगेटिव चार्ज है, then also it can means it is not being seen by those protons. वो जब जनरेट हुआ ना, तो बाकी प्रोटॉन ने इसे मिस कर दिया. कूलम इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी थी, but those proton are more involved in the strong forces. They don't have interest in these electrons, and they come out. Similarly, if you have a positron, obviously that will have a repulsion force, but that is also due to other reasons that it come out. And there is another possibility, third one, which is called as electron capture. So that is also beta decay. I will just write all the three reactions, which is actually the beta decay. So neutron is changing into proton, and there is a possibility of release of one electron. So this is a beta decay, a typical beta decay, a typical beta decay. Then another reaction, which is a proton, can convert into a neutron, and it will also have emission of a positive charge. So these are positrons, electron ka antiparticle positrons. Then you have a third kind of case in which the proton, and that can decay, not sorry, not that can not decay, just let me remove this one. It is electron capture actually. So this is electron capture. So in electron capture, what will happen? It will consume, or it will interact with the electron, orbiting electron of the atom. Means 1s electron को आपका nucleus capture कर लेगा. First class or second class, we have discussed that 1s orbit have a fair amount of time, and the electron go even inside the nucleus for some time. तो कई बार वो इलेक्ट्रॉन घूम के आ जाता था न्यूक्लियस से, लेकिन एवरी टाइम इट इज नॉट फ्री. कई बार गया और वहीं पे उसको किसी ने कंज्यूम कर लिया. So that is also possible. If the wave function overlap, then a wave function can collapse within the nucleus also. So if the wave function collapse, means 1s wave function collapse within the nucleus, then the electron vanishes. It will have to react with the proton, and that will generate a, क्या जनरेट करेंगे वो, क्या जनरेट करेंगे दोनों कंज्यूम करके? Neutron. So these three reactions or these three decay process are actually called as beta decay before 1931. 1931 से पहले की बीटा डीके की कहानी ये थी. 1931 में शायद Pauli has mentioned, I think I exactly not the date, but 1931 के around. उससे पहले बीटा डीके का मीनिंग यही था सभी के लिए. And these two reactions, which is actually the proton case, not for free protons. अगर कोई प्रोटॉन आपका नेसेंट फ्री यूनिवर्स में मिल जाता है, तो they will not follow this reaction. It is not possible. It is forbidden for them. Only the bounded proton will follow these reactions.
only the bounded proton. अगर कल को पूछा जाता आपसे एग्जाम में या conceptually कि what kind of proton follow the beta decay, so you will say only the bounded protons, means those proton which are involved in the nucleus formation, only those can follow the beta decay, or they can follow these kind of reaction. A free proton cannot engulf a electron. That is not possible. अगर ऐसा पॉसिबल होता तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होते ही नहीं आज के टाइम. तो अगर नेचर में हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो दे डोंट कंज्यूम ईच अदर. अगर ये पॉसिबल हो जाता है फ्री प्रोटॉन के लिए, तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होते ही नहीं. यूनिवर्स में वी डोंट हैव हाइड्रोजन एटम. और हाइड्रोजन नहीं होता तो हीलियम नहीं होता, हीलियम नहीं होता तो बाकी सारे नहीं होते, फिर हम भी बैठ के पढ़ नहीं रहे होते. देयर कुड बी अ लंप ऑफ मास एंड देयर कुड बी अ लंप ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल. तो इस तरह का यूनिवर्स फॉर्मेशन होता नहीं, और ये कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है. इतनी कहानी बीटा डीके, ये डीके, वो डीके, ये रिएक्शन, वो रिएक्शन, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. Okay, this is the on a lighter note, but obviously this has a very deep meaning that free proton do not have this kind of reaction. Okay, one more thing, the free neutron have this reaction. It is followed by the neutron. If you find a neutron which is free, which is not a part of any nucleus, then it can decay, and the t half for this reaction is only 10 seconds, 10 minutes. I don't remember exactly, 10 minutes. 10 minute में decay हो जाता है, half हो जाते हैं. If you have 100 neutrons, after 10 minutes you will see only 50 neutrons, so they will decay easily, and that is very well favor. क्यों फेवर करेगा? क्योंकि इनको हाइड्रोजन एटम बनाना है, नेचर बनाना है. नेचर में हाइड्रोजन जब तक एटम्स नहीं बनेंगे, नेचर का कोई फॉर्मेशन नहीं होना है, तो दिस इज अलाउड. तो जिसने भी नेचर को डिजाइन किया है और सभी के मासेस पार्टिकल को डिजाइन किया, तो इन अ वेरी प्रॉपर वे, इन अ वेरी ऑर्डर्ड वे, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया. And someone has removed the antimatter which is produced in the universe by some reason. That is why everything is here. अगर antimatter भी equally number पे होते तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता. Only energy would be there. So that is a different thing. Obviously, in any beta decay, Z changes to Z plus minus 1. Neutron number changes to neutron plus minus 1. And A remains same. तो जब भी तीनों में से कोई भी बीटा डीके होगा तो ये केसेस फॉलो होंगे. Z या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, N की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, बट A विल रिमेन ऑलवेज सेम. जब भी Z इंक्रीज होगा, N विल डिक्रीज, एंड व्हेन Z इज डिक्रीजिंग, N विल इंक्रीज. तो वाइस वर्सा होंगे, बट A विल ऑलवेज रिमेन A. तो A विल नॉट चेंज. ओके, नाउ व्हेन we have this kind of understanding of the beta decay, we have a problem, because this is not the complete beta decay. So the problems which is related to the beta decay, we have discussed for several years. The first problem with the beta decay is energy conservation. Energy conservation is violated in a beta decay. तो स्टार्टिंग में थ्योरी पता ही नहीं चल रही थी कि भाई यहाँ तो वायलेशन के केसेस हैं और एनर्जी वायलेट हो रहा है, तो बीटा डीके इज समथिंग एल्स. पीपल हैव थॉट कि बीटा डीके एक नॉर्मल रिएक्शन ही है, इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और पता नहीं क्या हो रहा है, बट एनर्जी इज वायलेटेड. How the energy is violated, how they predicted this, let me just draw the curve for this one, that why the energy is violated in beta decay. When you have that kind of reaction, इसका मीनिंग ये नहीं कि हमेशा ही वायलेट होता है, भी हम उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि वायलेट हो रहा है और फिर उसको रेक्टिफाई भी करेंगे. तो दोनों चीजें करने के बाद हमने दोबारा सारे कंजर्वेशन लॉ को फिर से इंस्टॉल करना है, री इंस्टॉल करना है, जिसको हमने डिलीट कर दिया था. द बीटा डीके हैज डिलीटेड दोस conservation law. Again, it has been reinstalled in a proper way, and the energy conservation, momentum conservation, all the things are there in the beta decay also. But before this, means 1931, before the Pauli proposes certain things, this kind of result we are getting. If you sit with a detector and you try to measure the energy of the beta particle, alpha के लिए हमारे पास measurement था, and alpha was a unique monotonic kind of thing.
Yeah, monotonic means a single value of energy, you can say. Every particle, every alpha particle comes with a single value of energy. It doesn't mean कि एक एटम आपके एक ही अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, वो तीन चार तरह के अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, बट उनकी एनर्जी यूनिक होगी. If it is emitting 3 alpha particles, always you will find these 3 energies only. You won't find any other energy than these 3 values. So there is a peak. एक particular energy value पे peak है, ठीक है. But जो beta particle की energy, that is not a peak value. This was the curve, a typical curve of beta decay. So you are sitting to measure the Q value of a beta decay. आप Q value measure कर रहे हो, और या काइनेटिक, या यू कैन से जस्ट मेजरिंग द Q वैल्यू भी छोड़ दो, आप Q वैल्यू करोगे तो कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, यूनिट. तो काइनेटिक एनर्जी आप बैठ करके मेजर करो, आपके पास एक डिटेक्टर है, उस डिटेक्टर से आप काइनेटिक एनर्जी डिड्यूस कर सकते हो. एंड हियर सिटिंग विद नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल. तो इवन फॉर अ जीरो काइनेटिक एनर्जी you find good amount of particles. तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे जिनकी एनर्जी 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. They are existing, but their kinetic energy is feeble, hardly measurable. So this is not zero. Then you find every possible value of kinetic energies. There is a continuous spectrum. Energy spectrum क्या है? Continuous है. यानी you find every kind of beta particle. किसी की, for example, let us say this highest value is 1.1 mega electron volt. आप बैठे हो, आपकी जो हाईएस्ट पॉसिबल, आपने 100 बीटा पार्टिकल्स मेजर किए, सबकी एनर्जी आपने रिकॉर्ड किया, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला किसी एक बीटा पार्टिकल का. वो बीटा पार्टिकल बहुत कम है, यू कैन सी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी इज वेरी स्मॉल. But you always find, you can also find 1.1, 1.01, 1.05, 1.02, and so on, 0.3, 0.7, 0.6, 0.66, 1.6, means every continuous possible value you have. जितने नंबर आप लिख सकते हो, वो सारे नंबर के एनर्जी आपको मिल रहे हैं. It means, what I know, one atom, when it emits electron, if I calculate the mass of this and mass of this and take the difference of that, and the mass difference multiply with c square, that must be equal to the kinetic energy of this beta particle. And this matches very well with this number. Yes, the mass difference give you this number. Any maximum possible energy of the beta particle is equal to the mass difference into c square. यानी वो delta m c square के equal है. That is okay. यानी we are getting a beta particle with the maximum possible mass difference between these two nuclei. But why we are getting these beta particle which is not having this energy? It means energy is missing. The reaction is there, means for example this beta particle, it has a less energy but amount is very big. इस वैल्यू से ज्यादा बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं. So why this is so? I am getting a beta particle, means I should get this one if I take the mass difference, but I am getting a beta particle of 0.4 mega electron volt. So where is the 0.7? 0.7 कहाँ missing है? या 0.71? This 0.71 mega electron volt is where? It has missed. वो गया कहाँ? हम measure नहीं कर पा रहे हैं. So that is why people thought कि yes, there is a violation in the energy for the beta decay. So they were able to say, and they have the firm things, ये वाला रिजल्ट ये रहा, मास का मैंने डिफरेंस किया तो वो तो मैक्सिमम से मैच कर रहा है, तो बाकी नंबर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर हर एक बीटा पार्टिकल की एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितना उसने मास का डिफरेंस किया है एक पेरेंट से डॉटर में, तो इट शुड बी देयर. तो वेयर द एनर्जी इज गोइंग? इट इज मिसिंग, इट इज गोइंग समवेयर. So we don't know. So energy is violated. The second case. Second is the conservation of linear momentum, as we have done for the alpha particle. Alpha particle, when it is getting emitted from the daughter nuclei, there is a conservation of angular moment, linear momentum.
The linear momentum is conserved. Means we have used the formula and we have reduced the kinetic energy of the particle. It matches with the experimental result. So there is a conservation of linear momentum is there for the alpha particle. But if I say that this is the daughter nuclei, when it emits a beta particle, it should recoil. भाई अगर बीटा पार्टिकल वो एक पर्टिकुलर मोमेंटम से एमिट कर रहा है तो ऑब्वियस है उसके पास एक रिकॉइल एनर्जी होनी चाहिए. When I sum up these two, means you can say momentum of daughter nuclei plus the momentum of beta particle with vector form, it should be 0. है ना, दोनों का मोमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो मोमेंटम हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट. सम ऑफ दैट मोमेंटम शुड बी 0. वेक्टर एडिशन दोनों मोमेंटम का करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, बट द रिजल्ट इज नॉट 0. It means the linear momentum is not conserved in the beta decay. The linear momentum is not conserved in the beta decay. Third case, neutron. What within the nucleus, what is happening? One neutron is being converted into a proton and plus an electron. Let us see the, if I forget about the orbital angular momentum, let us see the spin. So spin क्या होगा इसका? हाफ होता है. इसका स्पिन क्या है? हाफ होगा. इसका स्पिन क्या होगा? हाफ होगा. यही होगा ना? ये हाफ ऑफ सभी के स्पिन हाफ ही होते हैं ना. all the three things are fermions, so their spin is half. It means the initial half है that should match with the spin addition of these two. Means this half must be either half minus half or half plus half. दोनों addition possible है, angular momentum है. So vectorially these two additions are possible. This result in a 0, this result in a 1. So how can we half initially become 0 or 1? This is not possible. Again, there is a violation. So three things violated in the beta decay. First is energy. There is a missing energy. Second is, if you see the linear momentum, again, they don't matches to 0. They don't add up to 0. Third thing, if you take the spin angular momentum, again, that is not 0. Again, that is not left hand side is not equal to the right hand side. Half cannot be equal to 0 or 1. So, what is the solution? क्या solution है? अगर reactions ये हैं तो इनके solution क्या होना चाहिए? Anyone know what could be the solution? No, sir. आपने बीटा डीके का भी कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा कि बीटा डीके में कुछ और भी चीज होता है which is very important. Okay. The solution was given by Pauli in 1931. Yes, in 1931. What he said, he just proposed. Actually, he has not measured anything. And he just proposed that we should have another particle. It is not two-body problem. It is a three-body problem. Then everything will fit. All the violation will be reinstalled or being corrected. Two-body problem is a daughter nuclei and a beta decay. So after the reaction, you have only two things. So that is a two-body problem. So he said it is not two-body problem. We have a third particle also. And these are the properties of third particle, and that fits very well in this beta decay, and all the things are again preserved. All the conservation law has been reinstalled. So he proposed that he does not named it actually. He just proposed that the mass of that particle
a new particle, you can say, mass will be roughly zero. यानी rest mass उसका zero होगा, just like a photon. But it is not photon. It will have a spin half. It will have spin value half. It will move with, obviously the rest mass is roughly zero, so it will move with velocity c. Means आपकी जो velocity होगी ना उसकी motion की या move जो होगा, it will move with c velocity. C means speed of light. And it will not have any charge. Charge is also zero. So he came up with these properties for a new particle. And if you add, means that particle is emitted with beta particle. This particle always being emitted with the beta particle. It means from the nucleus only beta is not coming out, one more particle is coming out. And it has these kind of properties. And if you use this particle for beta decay, your everything is again conserved. Energy is conserved, momentum is conserved, and spin angular momentum is also conserved. And then later on, I think after some years, the Fermi named it as a neutrino. Fermi, Pauli ने propose किया, उसने naming नहीं की थी उस particle की. It was just like a new particle kind of thing, which is being emitted during the beta decay. Later, Fermi named it as a neutrino, which has a symbol mu. जो आपको frequency का होता है ना, वैसे ही उसको symbol करते हैं. So he said, this is the particle, I will name this. And he named in respect of Pauli that will be a neutrino. And for in history, I think around 20 years, people thought, and this is very recent, मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 साल पहले की कहानी है, this was the good candidate as a dark matter. You know the dark matter, what is dark matter? Yes, sir. And what is the percentage of dark matter in the universe? About 65%. 60 बहुत ज्यादा है. नहीं, 60. I'm not talking about dark energy, dark matter. Sorry, sir. Like 20, I think. Dark Yes, energy. 22 23 का राउंड है. Yes. और मैक्सिमम तो आपके डार्क एनर्जी है, एंड हार्डली 3 to 4% इज मैटर विच वी एक्चुअली सी. All the things which you see around yourself, galaxies, the stars, all these things are composing up to only 4% of the universe. Rest 22 to 23% is dark matter, and rest of that means 23 plus 4 कर लो 27 आ गया. So roughly 67% composition is the dark energy, which we still don't know what is that one. But for many years, these neutrino were the very prominent candidate as a dark matter. But आज के time उसे हमने हटा दिया है कि this is not the candidate for dark matter. Dark matter is something else. But it has all the property to behave in the, means to have the behavior of a dark matter. Mass is only one thing is different, that mass we have said roughly zero, but exactly zero नहीं होता है, which is very small in kilo electron volt. If I talk in energy terms, it is in kilo electron volt. Electron का mass क्या है? 0.5 mega electron volt. No, this line is not. ये line कहाँ से आ गई पता नहीं. This is 0.5. तो electron is heavy. Electron क्या है? Half of mega electron volt के mass का उसका value है. And these neutrino have kilo electron volt. Both feeble hai, not exactly zero. They are not like a photon. They are not like a wave which is generated for something else. But they are particles. They have certain mass, but that mass is very small. That is hardly countable. So they were the one good candidate for the dark matter. आज के time उसको neglect कर दिया गया है. अब वो बाहर हो गया है dark matter की picture से. It is out of the picture. But how this all the properties, all the this violation has been reinstalled, you just
we go through one by one. First one, that is energy, means whatever the Q is released, which Q is, what is the Q? Q is actually delta m c square. यानी जब आपका डीके हुआ तो जो भी मास डिफेक्ट आया, यानी इनिशियल मास आपका ज्यादा था, फाइनल मास आपका कम है, so there will be some loss of mass, and that loss of mass in the terms of energy, that is nothing but the Q. This delta m contains all the things. अभी हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा m में क्या क्या है. इनिशियल मास है माइनस ऑल द फाइनल मासेस है. तो दिस डेल्टा m c square which is Q, and this Q is shared between kinetic energy of beta particle and the energy of neutrino. तो दोनों ने शेयर किया, यानी जो मिसिंग एनर्जी आपको बार बार मिल रही थी बीटा स्पेक्ट्रम में, दैट इज नॉट मिसिंग, इट वाज कैरिड बाय द न्यूट्रिनो. अगर बीटा के पास कम है तो दैट एनर्जी एक्स्ट्रा विच यू हैव लॉस्ट और विच यू हैव मिस्ड, दैट इज बीइंग एक्चुअली कैरिड बाय द न्यूट्रिनो. सेकंड थिंग, again, means momentum of the daughter nuclei must be equated with the momentum of beta particle and momentum of neutrino. And if you do this, you will get BD minus B beta, or you can say plus sign में कर लो, वेक्टर के फॉर्म में कर लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं, तीनों को ऐड कर लिया वेक्टर्स के फॉर्म में, तो दैट विल रिजल्ट इन 0. ये हम मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, but this is I am writing in a vector form. So this total will be 0. यानी एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इसमें है, तीसरा इसमें है, तो they will add up to this direction and they will make it to 0. So this is a 3-body problem. Third one, that is a neutron which is being having means a neutron decays into proton and electron, and there is a anti-neutrino. न्यूट्रॉन के केस में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, और जब प्रोटॉन डिके होता है तो न्यूट्रिनो एमिट होता है. दैट इज आल्सो हैविंग अ रीजन, and we will see why this reaction is possible, why the other way is not possible. So these three particles, if you take the spin value, it is half, it is half, it is half, it is half. They can add up to 0 and half is left. You match with the equality. Left hand side में half था, अब half बच गया. Even if you get addition of these two as 1, then you can subtract this minus half and that will result again into half. So this is again fitted. Means all the three violation which you are able to see before 1931 in the beta decay, they have again been restored after the proposal of a neutrino. And there are two kind of neutrino and anti-neutrino. दोनों exist करते हैं. जब आपका अब जो reaction, अब after this proposal, when you write the reaction will be this one. A neutron will decay into a proton plus an electron and plus the anti-neutrino. A proton decays into a neutron plus a positron and plus a neutrino. And the third one is a proton consume or interact with the electron, that will produce a neutron and plus a neutrino. So these are the three reaction जो ऊपर के reaction है, और अब जो reaction में उनमें फर्क है. In all these three we have added the neutrino component and everything is now preserved. Now it is clear to you? या यहाँ कहीं डाउट है तो बताओ, फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे to determine the mass of the neutrino, कि how much mass a neutrino have. From the measured value of Q value for any particular reaction, we will try to calculate what is the mass. And once we have done this, then we can go for the typical beta decay for the nucleus. अभी तक हमने सिर्फ फ्री प्रोटॉन या न्यू प्रोटॉन के केस में और न्यूट्रॉन के केस में डिस्कस किया है. अभी हम न्यूक्लियस के केस में हमने डिस्कस नहीं किया कि व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव अ न्यूक्लियस. तो उसकी कैलकुलेशन हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम मास कैलकुलेट करेंगे. टिल दिस इफ इट इज क्लियर, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. If you have any doubt, you just हाँ बताओ.
Sir, in the starting you have told that in beta decay Z becomes Z plus minus 1 and N becomes N plus minus 1. Sir, what is N? N is neutron number. Z and N, capital N है ना वो. Okay, sir. आपका हो क्या रहा है, देखो न्यूट्रॉन एक डिक्रीज होकर के प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, तो न्यूट्रॉन तो डिक्रीज हो गया ना 1, और प्रोटॉन इंक्रीज हो गया. और किसी केस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोटॉन हैज डिक्रीज्ड एंड न्यूट्रॉन हैज इंक्रीज्ड इन द न्यूक्लियस. Yes, sir. है ना. और A विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने अपने आप को कन्वर्ट किया है. दे हैव नॉट वैनिस्ड, so they are there, but only conversion has happened. The total number of N and Z will always be same. Sorry, total number of total number of A will always be same for any beta decay. A में कोई चेंज नहीं आएगा. तो एक रफ मास कैलकुलेट करें न्यूट्रिनो के लिए कि what could be the mass of the neutrino if you know the outcome of certain energy, certain decay process. अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो डाउट है तो I can just repeat one more time, but if everything is clear to you, we can move forward. बढ़ जाए आगे, इसी पेज पे कर लेते हैं. ओके, ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा स्पेस है, तो लेट अस डू द कैलकुलेशन हियर. Okay, so this is the reaction. Because free neutron decay is possible in lab. तो lab में free neutron को easily you can see their decay and you can measure everything. So and free neutron ढूंढना भी easy नहीं है. If you have a fission reaction, uranium का fission होता है, तो you get 3 extra neutron, and that neutron you can use for any other purpose. Not for again a fission, but you can use for any other purpose. So free neutron, it is easy to generate. When this happens, the Q value in this reaction, the measured Q value is this one, 782, this is point, mega electron volt plus minus 0.013. अच्छा, mega electron volt मैं last में लिख देता हूँ, तो it will be better. This is the error part. And this reaction is easily measurable. ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, reaction बहुत सारे lab में हो चुके हैं, and this is the maximum possible error we get when we do the measurement for the Q value. And what we know more things, that is we know the free rest mass of these particle also. जो आपका न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके free masses हमारे पास calculated है. So we will just write the free masses. This has 939.573 mega electron volt. Proton has a rest mass as 938.280 mega electron volt, and mass of electron is 0.511 mega electron volt. This is also known. We know the Q value of this reaction and we know the masses of these things. Then we can easily write that this Q must be equal to Mn, initial mass before the reaction or before the decay you have, minus all the resultant masses, and do the C square. This number must be equal to this one. So you just know this value and you all know this value also. You can predict the value of this one. That is mass of anti-neutrino C square की value आप निकाल सकते हो.
आपके पास सारे नंबर्स हैं, एक बार जरा निकाल के बताओ कितना आता है। आपको m एंटी न्यूट्रिनो c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ऊपर मैंने सारी चीजें आपको दे दी हैं, यू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट। Hello, sir. हाँ बताओ। 0.78. 0.78 बहुत ज्यादा है, ये कैलकुलेट करो। q value is already there, and what you have to do the calculation mn minus mp minus me. How much that value is? mn minus mp minus me c square, तीनों में c square भी है। 939.573 minus 938.5280 minus 0.511, इस नंबर को बताओ कितना आ रही है। So 0.782. ओके, और Q में भी आपके पास 0.782 है। इट मींस Q is equal to Q is 0.782 plus minus 0.013 equal to 0.782 and this one. It means this must be equal to this number or 13 kilo electron volt. Is it so? दोनों में 782 तो आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से ही आ गए। तो जो आपका एरर पार्ट है 0.013, that error part is nothing but the mass of neutrino, और that is also error part, means जो mass होगा वो इतना या इससे भी कम होगा, that is the maximum possible mass and it can be less than that also. We don't know exactly, it is very difficult to measure the mass of neutrino, very difficult. और आपने ये भी नहीं पूछा जब मैंने कैलकुलेशन बोला कि सर आप सबके मास बता रहे हो, इसका ही मास बता ही दो। जब आपने इसके मास इसके मास इसके मास ले ही लिए तो इसका ही मास बताओ, फिर देखते हैं कैलकुलेशन करके। We don't able to actually capture the neutrino, it is very difficult. It took more than 25 years after its prediction, 1931 में predict हो चुका था ये। इसकी सारी properties as per theoretical framework it was given to you, but it took 25 years, more than that, to predict or to measure the first neutrino, because it is hardly reacting with anything. It is chargeless, it is a एलिमेंट्री पार्टिकल, इट इज नॉट कंपोजिट पार्टिकल। ऐसा नहीं कि किसी से बना हुआ है, जैसे पायॉन्स थे, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्वार्क, बट दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल, chargeless, mass is very small, so the reaction of these neutrino to any other particle in the nature is feeble, very 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 low. When we have the detector to measure the beta particle, that detector also captured the neutrino, but
it is not possible to hold the neutrino. It just cross that detector also. वो इस detector को cross करके निकल गया. That is why that has been missed, because their mass is very small. They don't have a charge. आपका photon charge से interact कर जाता है. It is also a chargeless particle, but it has an electric and magnetic field, so it interact with charge. But these neutrinos do not have any electromagnetic field. They are purely zero charge. Neutrino है, neutron है. Neutron is zero charge. But within the neutron, we have quark, which is actually plus charge or minus charge also. तो हमारे पास 2/3 का एक प्लस चार्ज भी है, -1/3 -1/3 के दो चार्जेस भी हैं. तो न्यूट्रॉन एज सच इट इज a neutral from the surface, but internally it has charge. That is why it give a magnetic moment, and it interact with the charge also in a very small interaction range. That is a strong forces में अगर है charge से भी interact करेगा. You can negate that thing because internally it has charge. Electron scattering करोगे तो you will able to see it has 3 dots. A neutron have 3 dots within that neutron radius. So when you bombard electron will diffract, it will scatter, and that scattering is due to Coulomb interaction of the neutron with the electron. Even though that is a chargeless, but internally it has a charge. But these neutrons don't have charge. Internally there is no picture. It is a point-like particle. So their interaction is so feeble that they are not able to measure. Even they were predicted, but it took around 25 years to predict the first neutrino, and that was which was predicted, that was also having error. उस एक्सपेरिमेंट में भी एरर था, तो उसको भी जस्टिफाई करने में लोगों के पसीने छूट गए कि एक्चुअली न्यूट्रॉनों को डिटेक्ट किया भी है कि नहीं किया. एरर इज आल्सो सिमिलर टू दैट वैल्यू, बट now people have done in a more better way experiment, and now they can pinpoint, yes, we have measured certain neutrino. This is very means every time we are crossed with the neutrino, हमारे से cross कर रहा है. Even the neutrinos coming from the sun, they cross easily from the surface of the earth, means put throughout the earth. It crosses without any reaction. तो हमारे हमको पेनिट्रेट भी कर रहा है, अर्थ को भी पेनिट्रेट कर रहा है, जुपिटर तक पेनिट्रेट कर रहा है, and just go to the solar system, end of the solar system, and there is no reaction at all. So these neutrino are very unique kind of thing. They don't interact, and we have to learn the neutrino physics. तो 2-3 pages हम neutrino physics पे भी करेंगे, but after doing the beta decay. So let us go to the beta decay of nucleus. अभी तक हमारा सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डीके तक था, बट नाउ वी विल गो टू द न्यूक्लियस केस. न्यूक्लियस केस के लिए लेट मी सी इफ आई हैव अ स्पेस. नो, सो जस्ट sharing you the first file, and we will do one by one the calculation for all the 3 kind of decay for the nucleus. Okay, so the typical beta decay process for a nucleus. So first we will do for the beta decay, and then we will do for the positron decay, and then we can do for the electron capture. For all the 3 cases, we will do one by one. So the first case is beta decay. You can say typical. For nucleus. So XA, this is a nucleus, and that when it has a beta decay, it will become X dash A when beta is emitted.
then the Z will increase and N will decrease, है ना? एक इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा तो क्या हुआ है, आपका न्यूट्रॉन has been converted into a proton and an electron. So proton number has increased and neutron number has decreased by 1 unit, proton increased by 1 unit, and A remains same. But the nucleus has changed because Z has changed. Plus a anti-neutron. Then what is the Q beta? What is the released energy in this beta process? So that we have to calculate. हमें जो कैलकुलेट करना है, हमें Q बीटा बीटा माइनस, हम बीटा माइनस पे फोकस कर रहे हैं अभी, बीटा प्लस बाद में करेंगे. तो बीटा माइनस Q beta minus means energy released during this particular decay process that we have to calculate. So that will be nuclear mass. Mn is nuclear mass, not the atomic mass. It is nuclear mass of X A Z N minus nuclear mass of X dash, which is A Z minus 1, sorry, Z plus 1 and N minus 1. And minus Me, 1 electron. And we will not take the contribution on this because we have already said it is treated, it can be treated as a negligible mass or rest mass is 0. So this is the mass difference in totality, which will result in a Q beta. And you multiply with C squared. But we don't have the table for nuclear masses. We have the table for atomic masses. So we have to write this nuclear masses in terms of atomic masses. जब हमने binding energy किया था तो ये काम हमने किया था. If you remember. याद है? Mass of any atom, and obviously when you multiply with C square, that will be equal to nuclear mass of that atom plus what we will do. ऐसे तो मैं बहुत पुरानी क्लास की बात कर रहा हूँ, फिर भी अगर masses के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? Atomic rest mass of atom is equal to rest mass of your nucleus plus rest mass Z times the rest mass of your electron, जितने भी इसमें Z होंगे क्योंकि वो Z आपने न्यूक्लियस से अटैच किए हैं, and minus the binding energy of all those Z electrons to the nucleus. This is how we have the equation for nuclear and atomic masses. नहीं याद है? This is Z. कुछ याद है? Yes, sir. Okay, so just replace this term by all these three terms here for this nucleus and similarly for this nucleus, and minus Me. यहाँ माइनस मत लिखना नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इसको माइनस छोड़ दो, Me लिख दो सिर्फ. And try to find what is the final result. So this is just you have to do. पेपर और पेन ले लो. 3 टर्म्स इसके लिए लिखना है, 3 टर्म्स इसके लिए लिखना है, और ये आपका एज इट इज रहेगा. एंड थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखो क्या आंसर आता है. और वन मोर थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन नेग्लेक्ट द बाइंडिंग एनर्जी टर्म, बट वैसे ऐसे नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं होता है. इट इज मोर इन अ better explanation. You should decrease, means you should actually first include this term, because binding energy एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, Z electrons. If you have a
50 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाइंडिंग एनर्जी एड अप टू वेरी बिग वैल्यू। तो उसको पहले लेके चलो, बाद में उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। पहले एक बार जरा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा करो ट्राई, कुछ करना नहीं है, उन तीनों टर्म्स को यहाँ लिखना है दोनों केसेस के लिए, एंड ट्राई टू सॉल्व देम। शुड आई डू, क्या हो जाएगा? देखूं, लिखना शुरू करता हूँ, तो टाइम लगेगा। So let us write for this term first. This is Ma, atomic mass, AZN, bracket close, minus Z times Me, C square लास्ट में हम डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया माइनस, ये टर्म यहाँ पे आ गया। इसको हमने साइड में रख दिया है क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में, दिस इज इन एनर्जी फॉर्म, इसको लास्ट में लिखेंगे। दिस वन माइनस Ma XA Z plus 1 N minus 1, इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी आएगा, माइनस आएगा, तो दैट विल बिकम प्लस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर एटम, इसको एक्स डैश कर देते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव Z plus 1 इलेक्ट्रॉन्स, Me, and there is one extra Me already there, so that we have to write, and we can close the bracket because all the masses we have written, and C square, and now we are left with the binding energy. तो पहला तो ये प्लस में रहेगा, summation of Bi, I is going from 1 to Z, जो पहला एटम था। दूसरे एटम के लिए वो प्लस में आएगा, बट वो माइनस साइन के साथ है तो माइनस में आएगा। I is going from 1 to Z plus 1 Bi, ओके, ठीक है, is it okay? Yes, sir. Clear. Now we just collect all the terms which we can collect easily. Ma x a and z, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, x डैश लिख दूंगा, ठीक है, माइनस Ma एटॉमिक मास x डैश, एंड z माइनस साइन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन माइनस में है तो z प्लस 1 और एक z प्लस 1 प्लस में है, तो दे कैंसल आउट, so we are left with this one and C square.
What about this? This is a big number. This is also a big number. But that results into minus summation of bi, not summation, only bi, because there is z plus 1 terms and there is z terms, so you are left with only one bi for any one electron, maybe the last electron, maybe the first, that is up to you how you just do. Obviously you just cancel all the inner electrons, last वाला बच गया. So this is always in a kilo electron volt, and these numbers will be in a mega electron volt. It is a fraction of kilo electron volt, tens of electron volt. So you can neglect this one. यहाँ पे मैंने क्यों नहीं neglect करने के लिए, because when you have the z times of this bi, that is a big number. Z plus 1 times means you are going adding b1, b2, b3, b4. That number is a huge. But these two are comparable, and when you subtract these two, you get a very small number. So this final equation for Q beta means energy released in the beta decay. That will be mass of parent minus mass of daughter into C square. That's all. ठीक है? And this released energy during this beta decay will be shared between the kinetic energy of the electron and the total energy of the neutrino. एक को मैंने काइनेटिक बोला, दूसरे को मैंने टोटल बोला. उसका रीजन है, उसका रीजन आई गेस की आप लोग बता सकते हो. सो क्यू बीटा माइनस विल बी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं टी बीटा. So T beta minus and plus EV. So this will be equal to this one. And T beta minus maximum possible energy will be Q beta minus, and E neutrino maximum will also be Q beta minus. जब बीटा की एनर्जी 0 होगी तो मैक्सिमम एनर्जी ईवी के पास होगा, न्यूट्रिनो के पास होगा. जब न्यूट्रिनो की एनर्जी 0 होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी बीटा के पास होगा. तो बीटा का इक्वेशन ये है, but they will share. Sometimes this is maximum, sometimes this is maximum, and sometimes they both share the certain value. But total of this value will be Q beta minus. ठीक है? Is it clear? Numerical हम बाद में करेंगे. That is in tutorial class. Why I said EV, मैंने यहाँ क्यों नहीं TV बोला, क्योंकि TV भी मैं लिख सकता था kinetic energy of neutrino. Why I have not said TV? Why I have said EV? Even for electron case, they are relativistic electron because their energy is good amount with respect to the rest mass. So you should use relativistic, but we will not use here. इस kinetic energy की calculation में हमें relativistic energy की जरूरत नहीं पड़ेगी. But why I am writing EV? Why I am not writing TV? वहां पे मैंने total energy बोला, kinetic energy नहीं बोला. Rest mass of neutrino is roughly 0. And if your energy is in mega electron volt, it means आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था ना, न्यूट्रिनो का रेस्ट मास एनर्जी क्या था, यहाँ लिखता हूँ 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And when you're beta decay, their energy is mega electron volt, which is more than the rest mass. So you should use the formula, this one. You cannot use the kinetic energy formula. You have to use total energy. And when this is very small, this is 0. So the total energy, whatever you say as a kinetic energy, that is nothing but the total energy of the neutrino. इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी जो एनर्जी होती है पॉइंट, even in this case also it is possible, but you can say that the total energy for this case is
इलेक्ट्रॉन के केस के लिए अगर टोटल एनर्जी निकालने के लिए बोलता है कोई, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी फोर आप करोगे. So this is your something which is like a kinetic energy, and this is your rest mass energy. The rest mass is not a zero, but in this case it is zero. So that is why we are using EV. We don't have TV. तो वहाँ पे टोटल एनर्जी होता है, वहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, उसका रेस्ट मास नहीं है, which is always having एनर्जी. जैसे हम फोटोन के केस में करते हैं, फोटोन केस के उसमें हम क्या कहते हैं, there is no kinetic energy of photon, there is always the total energy of the photon, which is h nu, yeah, pc. Okay, so this is your extra bonus point. Now we do for the positron decay. ये अब आप करोगे. Let me see what is the final result you are getting for the positron decay. That is XaZn. When do a positron decay, it become A Z minus 1, N plus 1, and plus electron with a positive charge and plus a neutron. Use the same steps which you have used earlier, and all the negligence which you have done कि इसको neglect करेंगे उसको neglect नहीं करेंगे. Use those conditions and find this q beta plus and give me the answer what is that value is. ये आप लोग करो और फाइनल आंसर बताओ. ये मैं नहीं करूंगा, you have to do. So in the same sense, first write down the nuclear masses and minus the electron mass. Positron electron दोनों के mass same होते हैं, तो you will write just the Me, and then replace these two masses by the atomic masses and binding energy terms and electron terms, and then solve that.
Any result reached or still on the way? किसी नतीजे पे पहुंचा है कोई या अभी रास्ते में ही है? So one additional term minus 2 MEC square will appear. There. Okay. So I will not do in the detail here. I will just write the MA atomic mass of X minus atomic mass of X dash, which is daughter nuclei, and minus 2 ME. This is what you have said? Yes, sir. Okay. So this is the difference between the beta and positron decay. It means beta decay is favorable, means it is spontaneous, even if mass is more than, means parent and daughter have some mass difference. Then beta is spontaneous. Means parent is heavier than your daughter, then beta is possible. But positron decay is only possible if the mass of parent is at least must be equal to the mass of daughter and plus the mass of 2 electron. यानी दोनों 2 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 2 Me की वैल्यू अगर सी स्क्वायर की लिखते हो तो 0.511 है प्लस 0.511 हो गया. This is 2 2 and 1.0. So at least this much mass difference between the parent and daughter must be there. Then only the positron decay will be a spontaneous decay. अगर इससे कम है मास डिफरेंस तो बीटा पॉसिबल है बट पॉजिट्रॉन पॉसिबल नहीं. ठीक है, बाकी तो उसके ए जेड और एन के कॉम्बिनेशंस भी हैं, बट फॉर एनी पॉजिट्रॉन डीके द मास डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, then only the positron decay is favorable. Okay, so this is the difference between positron decay and the normal beta decay. तो मास का एक important term है which is 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, which is very high value. वन एक एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी के आसपास की वैल्यू है ये, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है. और अब हमारा जो लास्ट रह गया that we will do on Saturday, which is electron capture. And again, we will see what is the mass difference and what kind of any equation is there for the mass difference between a daughter and parent for an electron capture to be favorable. तो अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं, and then Saturday we will also finish the angular momentum and parity selection rule for the beta decay. So that we will also finish. So beta भी हमारा खत्म हो जाएगा next Saturday. मेरे ख्याल से इससे ज्यादा है नहीं इसमें कुछ. Yes, only this much is there, and then we will go for the gamma decay on next Monday. तो hopefully इस month ये वाला chapter आपका खत्म हो जाएगा, and I think the next one is reaction, and yes, reaction is there. So we will start with the nuclear reactions. On next week नहीं, next month में I would like to finish the
nuclear reactions, interaction of radiation with the matter, and maybe starting the detectors. And what you have to start learning for your assignment is about the accelerators. And I would take as a presentation for all the students. One by one, you have to explain the accelerators, which you have already done. Cyclotron हो गया, Van de Graaff हो गया, उसका higher version tandem हो गया. So you have to explain those because it is not very typical thing that I should take the class for that one. फिर भी डाउट होगा तो हम उस प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर लेंगे, बट दैट विल बी समथिंग लाइक योर असाइनमेंट जो 25 मार्क्स का होता है ना, तो उसके लिए आप एक्सीलरेटर पार्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दो. We have cyclotron, we have synchrotron, we have linear accelerator, we have the Van de Graaff and its modification, that is tandem. And you should also have the some knowledge that which of the accelerator we have in India and where it is in India. तो थोड़ा सा इसका भी आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हो, बहुत जगह मिल जाएगा आपको, बहुत सारी बुक में भी मिल जाएगा. तो what you have to do, you have to start reading the accelerator part. That is also in the crane, and I will share a book for that also, but that is in a very detail. तो उससे अच्छा सा पढ़ने से अच्छा है कि आप क्रेन से पढ़ लो. क्रेन में it is more than enough to learn the accelerator. एक्सीलेटर में कोई बहुत डिटेल थ्योरी नहीं चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है, मैग्नेटिज्म पता है, और ऑसिलेटिंग करंट पता है, तो बस वही सारी थ्योरी है. दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग. तो वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको एज अ प्रेजेंटेशन यू हैव टू गिव वन बाय वन. आई विल गिव यू द रोल नंबर्स कि इस दिन इन बच्चों का है, तो 10 मिनट के लिए दे विल प्रेजेंट द particular whatever the topic they have given or they have been allotted. Okay, so next month we will try to finish the 2 units, that is the reaction and interaction, and then we are left with only detectors and particle. So that we will do in November. October भी है हमारे पास, November भी है, and बस मेरे ख्याल से हो जाएगा खत्म. ठीक है. So this is message from myself. तो थोड़ा सा एक्सीलेटर पे प्रिपेयर करना शुरू कर दो. मे बी आई विल स्टार्ट इन सितंबर, क्योंकि बच्चे भी आप काफी ज्यादा हो, आते नहीं हो, लेकिन जब बुलाए जाएंगे फिर आना ही पड़ेगा. दैट इज समथिंग लाइक योर असाइनमेंट 25 marks. Okay, so bye bye for now. We will meet on Saturday, and this Saturday we will also have the tutorial class from the alpha, or maybe from the beta also we will have the questions. So just I am stopping the recording, and then I just